So students, now moving on to the next question here. So you can see the question is 8th part. You can see that is given as XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC. So you will find out, let me first mark that. I suppose I forgot to mark X and Y points here. So you can see XY is a line which is parallel to the side BC of triangle ABC, right? So अब जैसे ये जो XY है एक लाइन है जो कि parallel है BC side के of triangle ABC, right? Also if BE is given parallel to AC, so अब जैसे ये जो BE है that is parallel to this line AC. So अब जैसे ये दोनों parallel lines है given है. Also you can see CF is parallel to AB. So if I just mark on CF which is parallel to AB, that is also given here. So you can see CF is parallel to AB and BE is given parallel to AC. So ये जो दोनों pairs हैं, you can see of the lines are given parallel here. Also this XY is parallel to BC. So overall there are three pairs, three side pair which are parallel to each other, right? So you can see XY is parallel to BC, then BE is parallel to AC and CF is parallel to AB. This is given here. Also you can see the further thing is that both you can see BE and CF, if you just observe here BE and CF, you can see are joined with X and Y like this, right? So that is given here that meet XY at point E and F, right? So ये जो BE और CF हैं, ये दोनों lines जो हैं आप देख सकते हैं, ये XY line से कहां पे मिलती हैं? E और F point पे. अगर मैं XY को extend करता हूं बोथ साइड्स पे तो वो E और F पे जाके मिलेंगी इन दोनों साइड्स को, राइट? सो BE और CF जो है वो मीट करती हैं XY को एट द पॉइंट्स यू कैन सी E एंड F, राइट? सो देख सकते हैं आप दोनों मीट कर रही हैं E और F पॉइंट पे. नाउ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू शो दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. सो वेयर इज ABE? यू कैन सी ABE. सो दिस ट्रायंगल हियर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, this triangle here. So ये दोनों triangles का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? Equal हो जाएगा, right? So this is what we have to prove here actually, right? So starting off my solution, so how we will prove that these two triangles are equal in area? The first step to prove this is you can see सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि ये जो XY है ये parallel है BC के. So let me first write down the solution here. So we know that XY is parallel to BC. So ये XY अगर BC के parallel है, then we can say that EY is actually parallel to BC. क्योंकि XY और EY में कोई फर्क नहीं है क्योंकि XY को extend करके ही तो EY फॉर्म हुआ है. So अगर XY BC के parallel है, that means EY is also parallel to BC. So ये complete line जो है वो BC के parallel होगी. So this implies EY is parallel to BC. Also you can see that EB is given parallel to AC. You can see EB is given parallel to AC. So अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो AC है अगर ये पैरेलल है that means YCB क्या होगा? EB के पैरेलल होगा because ये पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो इतनी लाइन भी इस EB के पैरेलल होगी. So आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज प्रूव की that अगर ये XY BC के पैरेलल है तो XY का मतलब क्या है? EY लिख सकता हूँ. तो XY पैरेलल तो EY भी पैरेलल होगा. So EY is parallel to BC. Similarly अगर मैं BE given है AC के पैरेलल, सो अगर BE AC के पैरेलल है दैट मींस YC के भी पैरेलल होगी और यू कैन से CY, राइट? सो यहाँ पे BE और YC जो है वो भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. सो यू कैन सी EB और यू कैन से BE इज पैरेलल टू CY, राइट? सो अगर ये AC के पैरेलल है सो CY के भी पैरेलल होगी, राइट? सो ये इसके पैरेलल है देन ये पूरी साइड EY BC के पैरेलल है. सो अब इसमें ये अपोजिट पेयर्स जो है वो इक्वल है दैट मींस parallel है. You can see then if opposite pairs are parallel then we can say that that figure is a parallelogram. So अब इसमें यहाँ पे BCYE क्या हो गया? एक parallelogram prove हो गया. So let me just give it equation number first and second. So from equation number first and second we have, so what we can write is that BCYE is a parallelogram, right? Now the next thing is you will find out that if you just observe this triangle ABE, right? So ये जो ABE है ये बेस BE के ऊपर बन रहा है and also this parallelogram BCYE is also on the base BE, right? So अब इसमें इसी बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है. Now there is a property that
You can see if I just redraw a rough diagram here, so you will find out. अगर मैं यहाँ पे एक parallelogram बनाता हूँ, so let me just mark it as ABCD. Then एक triangle बनाता हूँ, which is named as AEB, right? So आप देख सकते हैं ये जो triangle AEB है और ABCD parallelogram है, दोनों same base और same parallels के बीच में है, right? So whenever a triangle and a parallelogram lie on the same base and between same parallels, तो जो triangle का area होता है, so the area of triangle forming there is having the area equal to the half of the parallelogram, which is lying on the same base and between same parallels. So यहाँ पे parallelogram कौन सा है? A, B, C, D. So this is the conclusion by the property. You can see here. So यहाँ पे भी similar property apply करेंगे हम, that we know that this triangle forming here and the parallelogram, you can see BCYE, you can see here, both you can see lie on the same base and between same parallels, right? So we can say that BCYE, the triangle here ABE is going to have the area equal to half of BCYE. Getting my point? So आप देख सकते हैं इस parallelogram के half हो जाएगा इस triangle का area. This is our next step, which are we going to prove here, right? So let me just make some space. So as we know that a triangle and a parallelogram lying on same base and between same parallel are such that area of triangle is half of the parallelogram, right? So this is the property here. So this implies, you can say that area of triangle ABE, let me just write in the capitals. So if I just write it correctly, ABE is going to be half of the area of parallelogram BCYE, because both are lying on the same base and between same parallels. You can also write down the base, the same base, which is, you can see, BE, and the parallels as, you can see, BE and you can see AC. So ये BE और AC के बीच में ही देख सकते हैं आप दोनों triangles और same base पे हैं और दोनों parallels के बीच में है, right? So this is how you can see, we can say that the area of triangle ABE is half of the parallelogram BCYE. So let me just give it equation number 3, right? So अब यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हैं. Now similar kind of condition is occurring at the right hand side of this figure. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे भी एक triangle है ACF, and again यहाँ पे हमें पता है कि अगर XY parallel है BC के, so we can say that XF will be parallel to BC. Also it is given that the CF is parallel to AB. So अगर CF AB के parallel है, so CF जो है वो BX के भी parallel होगी, because ये पूरी parallel है तो आधी भी इसके parallel होगी. Then we can say that BCFX is also a parallelogram. So this is what we are going to prove here. So for that, let me just make some space. Now you can see, as triangle ACF, but before that you can see we have to first prove that this is a parallelogram, right? So let me just first prove that thing here. So as we know that this XY, now you can see XY is parallel to BC. So this implies, you can see that XF is parallel to BC. And you can see also it is given that this CF is parallel to AB. So basically CF जो AB के parallel given थी question में, so that will mean that CF is parallel to BX, right? So CF is parallel to BX. AB बोल लीजिए या BX बोल लीजिए, same line है, तो ये इसके parallel है, तो ये इसके भी parallel होगी, right? So as you can see, so let me just tell you that if I just, so you can say that अगर ये दोनों sides parallel हैं, so we can say that
BCFX is a parallelogram, right? So quite easy. I think similar condition which was occurring on the left hand side is also on the right hand side, right? So आप देख सकते हैं ये जो now हमने प्रूव कर लिया कि BCFX जो है वो एक पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल है, right? So this is a property of a parallelogram. Now as BCFX is now a parallelogram जो कि बेस CF के ऊपर लाई करता है, आप देख सकते हैं ये BCFX जो है CF के ऊपर आ रहा है. Also there is a triangle forming on the same base, that is ACF. So now as triangle ACF and parallelogram BCFX lie on same base BCF, let me just correct that, and between same parallels. So what are the name of the parallels? CF and AB, right? So अब इसलिए ये triangle और ये parallelogram CF और AB के बीच में lie कर रहा है, right? Right. So CF and AB. This implies you can see that the area of the triangle ACF is going to be half of the parallelogram BCFX, right? So let me just give it equation number 4th here actually, right? So आप देख सकते हैं third equation given थी, so now it will be the fourth equation. So अगर आप दोनों को observe करें, so यहाँ पे from third and fourth, the first thing before moving on to these two equations is कि अगर आप इन दोनों parallelograms जो हमने प्रूव किए हैं, that is BCYE and BCFX, both जो है आप देख सकते हैं same base BC के ऊपर लाई कर रहे हैं, right? So ये जो दोनों parallelograms आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों same base पे लाई कर रहे हैं and between same parallels as well. So इनका भी एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा, right? So let me just write down. I suppose I shouldn't have erased this equation here, so I'm just rewriting the equation here. The first equation, the third equation, which was, you can see that area of triangle ABE is half of the area of parallelogram BCYE, right? So that equation is needed further, so I'm not going to erase that. Now, as you can see, both the parallelograms BCYE and BCFX, you can see BCYE and BCFX both lie on the same base. Then let me just write that, lie on same base, which is BC, and between same parallels, let me just correct that, same base BC and between same parallels, that is, you can see BC and EF, right? So आप देख सकते हैं BC और EF जो है इन parallels के बीच में आ रहा है, दोनों parallelogram. So you can say that area of parallelogram BCYE is equal to the area of parallelogram BCFX, right? So आप देख सकते हैं दोनों जो एरिया है पैरेललोग्राम्स के वो इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम. नाउ अगर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में देखें, तो यहाँ पे BCYE लिखा है और यहाँ पे BCFX, दोनों पैरेललोग्राम को यहाँ पे मैं क्या प्रूव कर चुका हूं, इक्वल इन एरिया. सो अगर मैं यहाँ पे BCYE की जगह पे लिख देता हूं दैट एरिया BCFX, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, सो यू विल कंपेयर ऑन, यू कैन सी ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है और ये फोर्थ इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड ये इक्वल है, क्योंकि हमें पता था कि ये BCYE एरिया को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, BCFX के, बिकॉज दे आर सेम. सो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया BCYE की जगह BCFX, राइट? सो आप देख सकते हैं ये जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की वो सेम है, दैट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट? तो वी कैन सी हाफ ऑफ BCFX, हाफ ऑफ BCFX, दोनों साइड सेम है. सो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल आल्सो बी द सिमिलर वन. सो लेट मी जस्ट राइट दैट. So you can say from equation number third and fourth, we can say that area of triangle ABE is equal to the area of triangle ACF. And this is what we have to prove in this question from the starting, that you can see that ABE, this triangle here, is equal in area to the triangle ACF. And this is what we have to prove in this question. So I hope you all have understood how to solve these type of questions. So that was all in this question. So students, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
Now you can see question number 9 here is, यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है. Let me just read the question first. That the side AB of a parallelogram ABCD. So you can see here the side AB of parallelogram ABCD. So हमें ये गिवन है that ABCD is a parallelogram और इसकी जो साइड AB है इसको हमने प्रोड्यूस किया कहां तक, P तक, right? So you can see here that AB is produced to point P here. Then you can see a line through A and parallel to CP. So आप देख सकते हैं A के थ्रू एक लाइन, you can see this one which is parallel to CP. So आप देख सकते हैं ये जो A से लाइन निकल रही है ये parallel है CP के, and you can see produced at Q. So आप देख सकते हैं ये जो CP है उसको हमने प्रोड्यूस किया कहां तक, Q तक. Then a line through A which is parallel to CP and you can see then meets CB at point Q. So ये जो लाइन है A के थ्रू ये CP के पैरेलल है और CB को कहां मिल रही है, एट पॉइंट Q. ये दोनों पॉइंट्स Q पे मिल रहे हैं, दोनों साइड्स फ्रॉम A एंड द CB. Then you can see a parallelogram is formed which is named as PBQR, right? So इस लाइन को प्रोड्यूस करने की वजह से, जो कि A को कहां मिल रही है, Q के ऊपर, इस लाइन की वजह से आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मिलेगा, that is PBQR, right? So again this is given that this PBQR is a parallelogram. So हमारे पास यहाँ पे इस फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम प्रेजेंट है. One is ABCD and the other one is PBQR, right? So you can observe both the parallelograms clearly, right? Now what you have to do here is show that the area of parallelogram ABCD is equal to the area of parallelogram PBQR, right? So हमें इन दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं. So how we will do this? सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी, एंड द कंस्ट्रक्शन इज कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, मैं इसका डायगोनल्स जो है उसको ड्रॉ कर लेता हूं, द डायगोनल AC हियर, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, यू कैन सी द डायगोनल AC. एंड सिमिलरली इस PBQR पैरेललोग्राम का भी मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, दैट इज QP, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखें, सो आई हैव ड्रॉन two diagonals of both the parallelograms given to me, right? So let me just draw it a bit straighter here. So I'm not drawing it with the help of a scale, so that's why it's a bit quirky. So that is okay, right? Still I feel that there is something missing. Let me just redraw that. So that will be like this. So, and let me just redraw this one. Still it's breezy, right? Now it's fine, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एज वेल एज PBQR. So हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है. So starting off my solution with the construction here. So draw AC and PQ, the diagonals of both the parallelograms ABCD and you can say PBQR, right? So यहाँ पे मैंने दोनों पैरेललोग्राम्स के जो है डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए. नाउ दिस वाज द कंस्ट्रक्शन. अब हम मूव करते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ. सो हाउ वी विल नाउ प्रूव, so proof that area of parallelogram ABCD is equal to the parallelogram PBQR. So कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहली चीज, मुझे पता है कि जो डायगोनल है वो डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को इन टू इक्वल पार्ट्स, राइट? सो आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल है वो इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट मींस ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल. सो दैट मींस ABC जो ट्रायंगल है दैट विल हैव द एरिया इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल जो है वो दो हाफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल हाफ ट्रायंगल. सो ये जो हाफ पार्ट है दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट? सो as we know, let me just write it correct, that the diagonals divide the parallelogram in two equal parts, two equal triangles, you can say, right? So
That means that the area of triangle ABC is going to be the half of area of parallelogram ABCD, right? So let me just give it equation number first, right? Similarly, you will also find that this diagonal of parallelogram PBQR also divide it in two equal triangles. So that means we can also say that ये दोनों half equal parts हैं. So ये जो PBQ triangle है, that is also equal to the half of PBQR parallelogram. So writing the same thing here. So now again you can see that area of triangle PBQ. Now you can write down again the similar thing, that the diagonals of a parallelogram divide it into two equal triangles, right? So you can write it down. Now I'm just writing directly that this diagonal will divide it in two equal parts. That means PBQ. Let me just write down that PBQ is equal to the half of the area of parallelogram PBQR. Let me just correct that. Right, so let me give this as equation number second. Now, अगर आप ध्यान से देखें, हमें equation के अंदर prove क्या करना है? That ABCD, you can see parallelogram is having equal area to the parallelogram PBQR. So हमें दोनों parallelogram का area equal prove करना है. And you will find out in both the equations, जो right hand side है, उसमें ABCD और PBQR आ रहा है. So अगर मैं इन दोनों equations की left hand side जो है, अगर ये equal prove कर दूं, then definitely the right hand sides are going to be equal. So ये half से half cancel हो जाएगा, then we will get what we require, that ABCD is equal to PBQR, right, in area. So हम यहाँ पे कैसे prove करेंगे कि triangle ABC जो है उसका एरिया जो है ट्रायंगल PBQ के इक्वल है, राइट? सो अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो है प्रूव करना ये बन गया कि इस ABC ट्रायंगल का एरिया जो है वो PBQ के इक्वल है. सो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों डायगोनल्स की तरफ, राइट? सो इन दोनों डायगोनल्स की वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनको हमें इक्वल एरिया में प्रूव करना है, दीज टू ABC एंड PBQ. सो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनके बीच में एक कॉमन ट्रायंगल आ रहा है, दैट इज ABQ, राइट? सो अब ये जो ABQ ट्रायंगल आ रहा है, अब अगर आप इन बड़े ट्रायंगल्स की तरफ देखें, दैट इज ACQ एंड यू कैन सी APQ, राइट? सो यहां पे मैं लिख रहा हूं और अलग से ड्रॉ भी कर रहा हूं दोनों ट्रायंगल्स. सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस ट्रायंगल AC, you can see then a little bit lower, then you can see, let me just trace it back, this one, right? So you will find out this ACQ which I have drawn here and also this APQ, right? So आपको दोनों triangles दिख रहे होंगे यहाँ पे, मैंने दोबारा ड्रॉ किए, that ACQ and APQ, right? अब ये पॉइंट कौन सा आपके पास? B. So आप देख सकते हैं हमें ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वल एरिया में प्रूव करने हैं. आप देख सकते हैं ABC एंड PBQ ये किस में लाई कर रहे हैं? इन बड़े ट्राइंगल्स के ही पार्ट हैं, राइट? यू कैन सी हियर. अब अगर ध्यान से देखें, मैं इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं ACQ एंड APQ दोनों सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट इज AQ, एंड ऑल्सो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AQ एंड CP, राइट? सो हमें पता है कि जो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, राइट? सो यू कैन राइट दैट नाउ एज फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट triangle ACQ and triangle APQ lie on same base and between, let me just rub the downside here, and between, I'm writing down from here, same parallels. You can see what are the parallels? That are AQ and CP, right? So दोनों सेम बेस AQ पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AQ एंड CP, तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल. सो
this implies that area of triangle ACQ is equal to the area of triangle APQ, right? So यहाँ पे ACQ का एरिया किसके इक्वल आ गया? APQ के. Now you will observe कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव कर दिया. अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में से इन बीच वाले ट्रायंगल को माइनस कर दूं ABQ को, right? So let me just tell you that if I just subtract ABQ from both the sides of this condition here, so subtracting, let me first write that, subtracting triangle ABQ area, right? So let me just write down area of triangle ABQ on both the sides. So let me just rub that. So we are going to get that, you can see area of triangle ACQ minus area of triangle ABQ. So left hand side में से भी मैंने ABQ minus कर दिया. Similarly on the right hand side I will do the same thing. So यहाँ से भी मैंने ABQ minus कर दिया. आप देख सकते हैं इन इस ट्रायंगल में से अगर ये वाला निकाल दूंगा तो ये ट्रायंगल बचेगा. Then इस बड़े ट्रायंगल में से अगर मैं ये वाला निकाल दूंगा तो ये वाला ट्रायंगल बचेगा, which are required here. So ACQ minus ABQ is ACB, or you can say ABC, right? So let me just write down that will be equal to ABC, and you can see APQ minus ABQ is PBQ, this triangle, right? So that will be equal to area of triangle PBQ. Now, as I've told you that if we have proved, let me just rewrite the first situation, the first condition that I have erased right now. That was, you can see in the previous, there was ABC triangle. This one was half of ABCD, right? That was written here, which I have erased here. So that was the first equation. Now, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने ABC ट्रायंगल जो है उसको PBQ के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी ABC और PBQ क्या है, इक्वल प्रूव कर दिए. So let me just give it equation number, you can say first, second and third, right? So आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर थर्ड की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इक्वल है, यानी कि ABC और PBQ इक्वल है, तो इनकी राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि हमें पता है ABC और PBQ क्या हो गए, अब आपस में इक्वल हो चुके हैं, राइट? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, so I'm going to erase this diagram here now. So you can write down from equation number first, second and third we have, so आप देख सकते हैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ABC is equal to PBQ, so इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. So this implies that half of the area of ABCD will be equal to the half of the area of PBQR, right? So आप जैसे half से half cancel out हो जाएगा. So finally the area of ABCD parallelogram is equal to the area of parallelogram PBQR, right? Which is what we have to prove in this question. So this is how you can prove that area of parallelogram ABCD is equal to the area of parallelogram PBQR, right? So that was all in this question.